So now, once you have created your machine learning model, you cannot present your model to the client directly, can you? So जो हम लोग मॉडल बनाए वो हमारा पाइथन का मॉडल है, and we are how we are predicting the values using the model. We are passing some arguments, right? Predict, and then we are passing some parameters to it. Okay, यही करते हैं ना आप लोग. We are passing some parameters to it, but the client is not aware of all of the coding, and we don't want to show client what is coding, or they are not aware of anything such. Okay, so what we need to सर do is we आपकी need to आवाज deploy. क्लियर नहीं आ रही सर, थोड़ा इको हो रही है और थोड़ा सा सर मतलब डिफरेंट आ रही है आवाज सर. माइक बहुत क्लोज दिख रहा है सर. अब क्लियर है. नॉट क्लियर सर. Now, hello. हाँ सर. अब आवाज क्लियर है मेरी? हाँ सर थोड़ी क्लियर है, लाइटली मतलब ब्रेक. थोड़ा सा सर वही इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है. हेलो. हेलो. हाँ सर. क्लियर है? नहीं सर, ब्रेक हो रही है वॉइस अभी भी आपकी. वॉइस एक सेकंड. कैसा है? हेलो. नाउ इज इट क्लियर? हाँ सर कीजिए कंटिन्यू. यस सर. Okay, so now we can continue. So you cannot present the direct model to the client. So what we need to do is we need to deploy the model, right? Deploy the model. Deploy means क्या है? What do you mean by deployment? Deployment is nothing but making it available to the, right? Making it available to the clients, okay? To the client or user, because once the सर model अभी is भी पूरी वॉइस पूरी ब्रेक हो रही सर आपकी. नेटवर्क अब इशू है क्या सर वहाँ पे? okay. So the deployment, once the model has been created, we need to deploy the model, right? So deployment कैसा होता? हेलो. हाँ सर. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हमारी आवाज नहीं आ रही सर. हेलो. 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 नेटवर्क इशू है क्या? बहुत बारिश भी हो रही. हेलो. हाँ सर, आ रही क्या आवाज हमारी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. हेलो. जी सर, आपकी आवाज स्टक हो रही है, अटक रही है सर आपकी आवाज. हेलो.
हेलो, मुझे अपनी भी आवाज आवाज आ नहीं रही जा है रही यार। आमिर उनको। हाँ आपकी क्लियर आ रही, तारिक की क्लियर आ रही, मगर सर की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही हो। ऐसे क्या? शायद सर का नेटवर्क का इशू दिख रहा मेरे को, क्योंकि अपनी नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही है मुझे। नेटवर्क का हाँ तो सर इशू की नहीं इसकी। है यहाँ पे। नेटवर्क का तो इशू नहीं है। फिर ब्रेक कहीं हो रहा है वॉइस। अभी सही आ रही सर आपकी आवाज। अभी करेक्ट आ रही सर। अभी करेक्ट आ रही। ओके, सो नाउ first step after you created the model, we need to make sure that it is available to the client. So how can we do it? With the help of deployment. So हमें क्या करना है? We need to deploy the model. Okay. So there are couple of ways to deployment. Okay. So first of all, we have a very conventional method that is using Flask. Okay. This in turn uses HTML, CSS, JavaScript, and Python because our model is trained in Python. तो Flask जो है, it is very not eco-friendly as per the programmer perspective, because every programmer don't know about HTML, CSS, and JavaScript. And we have the same another deployment tool or framework which is called as Django. Django also same problem with the Django. We also need this knowledge. आपको HTML आना पड़ेगा, CSS आना पड़ेगा, JavaScript आना पड़ेगा, and then you need the knowledge of Python to deploy your model. Now, I think for last year, we have got this Streamlit. Yeah? Streamlit से आप क्या कर सकते हैं? You can deploy your model without even worrying about HTML, CSS, and JavaScript. Okay? आप model आपका deploy कर ले रहे without uh, without any difficulty or without even learning HTML, CSS, and JavaScript. What we can do is we can deploy our model. So I'll just show you what Streamlit is. So देखिए, this is a new open source library, Streamlit. Now, I guess you have completed your Python, and आप लोग को what is library क्या है, just what are libraries, ये सब आपको I guess you are aware of those. So this is our Streamlit website web page. Now over here we can see how we are building these data apps. ये apps कैसा बने जाते हैं. Okay, and there are more than 80% of Fortune 50 companies uses Streamlit for their in-house projects. Okay, in-house यानी जो उनका in-house deployment framework होता, they use Streamlit as their deployment framework. That is really simple to deploy a model on Streamlit. Deployment, have you ever seen what does a deployment looks like? Deployment कैसे दिखता है आपको देखिए आप. नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखी। एक second, I'll just show you. तो deployment model आपका कुछ इस तरह से दिखता. See, it will look just like this. Okay, कुछ इस तरह का दिखता है आपका deployment app where you can have multiple settings. तो हम पूरा जैसा front end है उसके तरह का आप बना सकते हैं. Okay, so now let us dive into what is Streamlit and how we can use it. So Streamlit is a
Python library which helps in deployment. Okay, ये Python library है just like scikit-learn you have done, right? sklearn करे आप लोग, and you also completed NLTK or NLP space भी करे आप लोग. So similar to this, Streamlit is also Python library which helps in deployment, and it is also a framework. Is also a framework. So now there are some requirements for the Streamlits. तो अब तक भी जो आप अब तक जो भी आप लोग मॉडल्स डेवलप करें, यू हैव डन इट इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, यानी डिफरेंट आईडी में करें आप लोग, जुपिटर नोटबुक में करें. एम आई राइट? whatever you have done it in a Jupyter notebook, but we need a ID which is speciality, which is specializes in working with deployment, that is VS Code और PyCharm. आपको ये तरह के आईडीज यूज करना पड़ता, बिकॉज यू कैन नॉट डिप्लॉय एन ऐप यूजिंग स्ट्रीमलिट. आप ये यू कैन नॉट डिप्लॉय एन ऐप यूजिंग जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक से आप डिप्लॉय नहीं कर सकते. आप you need different IDs as such VS Code or PyCharm. Have you heard of VS Code and PyCharm? Yes, sir. Visual Studio PyCharm. Visual Studio I did. Code and then PyCharm. These are the IDs. Okay, so you can run Python files in it, as well as we can also use for deployment purposes. Okay, so now let's start with creating our first Streamlit app. Okay, I create a folder Streamlit, and I'll then just मैं अपना VS I'll open VS Code. VS Code है क्या सर? जी जी, ये VS Code है. ओके, ये VS Code है. VS Code कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस है VS Code का. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, फिर आपका टर्मिनल यहाँ पर आता, न्यू टर्मिनल. दिस इज अवर टर्मिनल. टर्मिनल इज सिमिलर टू अवर कमांड प्रॉम्प्ट. आपका कमांड प्रॉम्प्ट कैसा है? इट इज सिमिलर टू अवर command prompt. Terminal is similar to our command prompt. So this is our interface. This is going to be your interface when you are working with Streamlit. Okay, so first of all, we need to create a Python file, not a notebook file. We need to create a Python file. Let's say I'll create a file. Let's say deployment.py. Deployment.py. Okay, dot Python file. We are creating a dot Python file. Dot Python. See, so now the first thing what we need to do is we need to install Streamlit. आपको हमेशा first point one to do is we need to install Streamlit. How we are going to install? Pip install Streamlit. Okay, या कुछ इस तरह से आप करेंगे. Pip install Streamlit. So what I can do, instead of installing in our file, I can just install it over here. Pip install Streamlit. Okay, if you don't have it installed, it will install. और अगर आपके पास पहले से ही Streamlit है, it will show you just as this requirement already satisfied. And then after Streamlit, you can look at the Streamlit as this one. आपको Streamlit hello type करना होगा. So this will not work in our uh, Visual Studio terminal. So we need to use desktop slash
Streamlit, and then Streamlit. Hello. One second. Now we can get our Streamlit application. Okay. So it sounds confusing. तो पहले आपको क्या करना है? First we need to use our Visual Studio Code as an editor. Visual Studio Code को आपको as an editor use करना है. And then you need to install our library, which is Streamlit. So I have it already installed. And once you install your Streamlit, we need to go to our Anaconda prompt. Okay, not our CMD Anaconda prompt. You can just find it at the start. Okay, at the start, Anaconda prompt, Anaconda 3. Okay, so we need to run this. We need to just run it with the help of Streamlit. You can either write Streamlit run deployment.py or Streamlit hello. Okay, so the first step in our editor file would be to import Streamlit. Okay, import Streamlit, and then the next thing what we need to do is we can explore some of the text, or we have a method called title. Title क्या करता है? It will show the title of the page. Let's say I'll keep it as deployment. Title of the page as deployment. So now in my Streamlit application, which we have run using Anaconda prompt, you can see यहाँ पे आपका टाइटल आ गया. देखिए deployment with an easy 2 step. आप क्या कर सकते हैं? We can get a web page. Okay, we can get this web page. Okay, and we are also getting this title. So similar to this, ये तो आपको मालूम है ना what is Streamlit and what is this method? This is a method, right? Title क्या है आपका? Method है. And I can also import Streamlit as st, just like we import pandas as pd, right? Pandas को हम लोग pd से import करते हैं. Import pandas as pd. We can import Streamlit as st, just like this. And also we have some of the headers. Okay, आपके पास header file भी है, header 1 कुछ इस तरह से. And then we can see the changes has been displayed over here. Header 1. Okay, and then for the normal text we have this text. यहाँ पे आपका देखिए normal text के लिए आपके पास एक method है text का. Okay,
title method. Header method displays the header. Title method displays the title, and we also have text method for our regular text. रेगुलर टेक्स्ट के लिए आपके पास टेक्स्ट का मेथड है, देखिए st.txt text. Now similar to this, we have some of the other functions. Just say st.input. Okay, we have let's say text input, and it takes parameters as, let's say, enter your name. I can just enter my name. Okay, I can just enter my name. Enter your name. यहाँ पर देखिए आपका ये लेवल है आपका एंटर योर नेम, एंड देन टेक्स्ट इनपुट है. वी आल्सो गॉट दिस नंबर इनपुट, एंटर योर मोबाइल. We also got number input, and you can also pass some of the parameters. Let's say minimum value is equals to 0. Okay, and then यहाँ पे आप आपका नंबर लिख सकते हैं. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा? हाँ सर. Okay, so confused नहीं होना आपको. We are not using Jupyter Notebook. We are using either VS Code यूज कर सकते हैं आप, या सर ये Python यूज कर सकते हैं. डिस्प्ले कहाँ हो रहा सर? ये एक बार मैं थोड़ा सा बीच में वो कॉल आ गया था तो सर ये हो गया था. हाँ, ये जो आप डिस्प्ले डिस्प्ले. कर रहे हो. ओके, तो वंस आप ये लिख के आप इसको सेव कर दीजिए. इधर वी गो टू एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. हम लोग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाके ये रन करते. देखिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाके आई विल शो यू वंस अगेन. ओके, वंस इट इज डन, वी गो टू एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. वहां से आपके डायरेक्टरी में जाइए. ओके, डायरेक्टरी में के बाद आपको क्या करना है? वी नीड टू रन दिस एप्लीकेशन रन कैसा करना है हमको? स्ट्रीमलेट रन. ओके, स्ट्रीमलेट रन, एंड देन फाइल नेम क्या है हमारा? deployment.py. ये है देखिए. तो ये क्या कर रहा है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके ब्राउजर पे रन हो जाता. ओके सर. ओके, यहाँ पे आपको यूआरएल भी प्रोवाइड कर देते. देखिए दिस वन, नेटवर्क यूआरएल, लोकल यूआरएल. ओके, सो deployment becomes this much easy with the help of to run file name. Okay, आप ये करना streamlit run file name.py. So we have couple of methods. पहले आपके पास title method है, and then we have text method, and we also have a header method. फिर आपके पास कुछ inputs लेने के भी methods है, जैसा text input. So now what we'll do, we'll just create a simple form. Okay, simple form create करेंगे with the help of Streamlit, and then we can proceed to the part of deployment in the later classes. So now in form, let's say we are creating a form. इनपुट लेने के लिए we have had text input, जो आपको स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इनपुट जो है it is in string, but over here we cannot write string. यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ही लिख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आ सकता, because this is a number input. Okay, because this is a number input. यहाँ पे सिर्फ आपका नंबर आता. And then there are a couple of more cool features, जैसे कि st dot date input. Okay, select date of birth. So I can also select date of birth.
देखिए, I am getting this. Select date of birth. I can select anything. Okay, select date of birth. So we have couple of input functions, couple of displaying functions, just as text है आपके पास, and we also have title and header. Okay, title and header. One more cool feature about Streamlit is we also have a buttons. You can also add button. You can also add button just as this Streamlit. देखिए, see, we have this, but enter your name and then enter your mobile, select date of birth, and then we can submit it with a button art. So is this easy? Yes, sir. Okay. I'll show you how does the flask look like. Okay. Flask is like you just have a look at it. See, this is how the flask look like, and this is not even the completed one. ये complete नहीं हुआ. This is just the starting one. Okay. So you have multiple files आपके पास. Okay. You need to work with these all of these files. You need to work with all of these images, all of these JavaScript files, JavaScript code, all of the CSS codes. Okay. When we use a traditional deployment method, you have these many things. So rather than doing all of these things just for the deployment, we proceed for the easiest one, which is Streamlit. Okay. Streamlit से क्या है? We can do our work a lot more easier. Okay. And lot more quicker. So अब आप बोलेंगे इससे deployment, how we can do deployment? आपको दिख रहा होगा ना deployment कैसा होता? So it is a Python code. I can run a model in it, and we have our model.h5 file. Okay, आपके पास model.h5 file रहती. We can run that model, and then जब आप model predict करते हैं, what do we pass? Okay, model predict करते तो क्या pass करते हैं हम लोग? थोड़े predictors pass करते रहे. Yes. थोड़े predictors वो करते हैं. जैसे कि यूएस हाउसिंग करें आप लोग. हाउसिंग का कैलिफोर्निया का स्टार्ट करे थे में सर वो उसमें कैलिफोर्निया का एचक्यूएल करे में करे थे। एसक्यूएल में करे थे. और कौन सा मॉडल करें आप लोग? कैलिफोर्निया का करे थे सर हाउसिंग का कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया हाउसिंग. हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन बोल के बताए थे सर हाँ हाँ हाँ, राइट. कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन. कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन. सिंगल प्रिडिक्शन बताए थे इसमें हाँ हाँ. So इसमें क्या 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 वो करना रहता है आपको? खाली हाउस का एज, ये प्रॉपर्टीज आपको ऐड करना रहता है, राइट? ऐड करके फीचर सर प्राइस प्रिडिक्ट करते ओके. कैलिफोर्निया प्राइस प्रिडिक्शन. तो मैं क्या कर सकता हूँ? एज, हाउस की एज बोल के व्हाट आई कैन डू? स्ट्रीमलेट नंबर इनपुट. ओके. नंबर इनपुट करके एंटर द एज ऑफ हाउस. यू हैव दिस पैरामीटर्स, राइट? पैरामीटर्स थे ना आपके पास? एंटर द एज ऑफ द हाउस. थे सर पैरामीटर। पैरामीटर्स है ना? मिनिमम 0. ओके. मिनिमम 0 यहाँ पे, like 0 1 2 3. You can enter the ages as well. Okay.
and then उसके पास as I remember the data set age भी रहता और bedrooms, right? Number of bedroom भी का भी हो रहा था, number of bedrooms. Of bedrooms is equals to minimum value is 0. Okay. So now you can see deflected right over here. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ बेडरूम का भी वैल्यू आ गया एंड देन और कोई पैरामीटर्स आपको याद है जैसा कि एरिया भी था उसमें, राइट? एस टी डॉट व्हाट वी कैन डू इज एरिया में क्या कर सकते हैं एस टी डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट बॉक्स। देखिए इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, सेलेक्ट बॉक्स में एक बेहतरीन चीज है, कैलिफोर्निया था वहाँ, ऑरेंज काउंटी और एल्स LA, I can put this as well. See, enter the county. देखिए तो यहाँ पे क्या है, you can also get a drop down with this LA, मैं इसमें select कर सकता हूँ any of the predictors and then what I can do is यहाँ पे button is equals to st dot button, button का नाम रखेंगे हम लोग predict, okay, and then what I can do is if button is true मॉडल, अगर आप मॉडल लिए तो क्या कर सकते हैं आप मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ये पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं एज, नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया, ये पैरामीटर्स ऐड कर दिए बाद इन्हें क्या करता प्रिडिक्ट करता एंड देन व्हाट वी कैन शो, लेट्स से यहाँ प्रिडिक्ट कर लिया बाद आई कैन जस्ट st डॉट सक्सेस प्रिडिक्शन, ओके, सक्सेस प्रिडिक्शन अपन ऐसा कर सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस as a success prediction. यहाँ पे आप with the help of this you can do so many things. Okay. Now I guess you have a clear understanding about what is Streamlit and how Streamlit works. Okay. सर यहाँ जो डाटा एंटर करेंगे यूजर एंड से, तो वो डाटा कहाँ पे आएगा सर? अपने पास वो उसमें पाइथन फाइल में आएगा क्या वो? जी जी, यहाँ पे आता है, यहाँ पे वो ये वेरिएबल्स में आके आ जाता डेटा। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, नीचे text age, text age यहाँ पे लिख लो, मैं 7 एज डाला तो प्रिडिक्ट करे पर देखिए यहाँ पे आ रहा, तो देखा क्या हो रहा, ये एज में यहाँ पे जो एज है इसमें आके इसमें असाइन हो जा रहा है, ये वेरिएबल पे असाइन हो जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड। फिर नंबर ऑफ बेडरूम का भी सेम, एरिया का भी सेम एंड देन व्हाट वी कैन डू विद हेल्प ऑफ दिस ओनली वी कैन प्रेडिक्ट द मॉडल। अब तो मेरे पास मॉडल नहीं है, that's why we're just looking at this model dot predict. So it is so simple with just one file and couple lines of code you can apply model easily. Okay. Okay. So I think sir will carry on from here. I guess sir will continue tomorrow, I guess. So sir is not continuing tomorrow. We'll look at how to deploy. I will get the model done by tomorrow itself. Okay. Okay.